गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। जेनिथ कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू जेनिथ कोचिंग क्लास। सो मैं आज क्या सिखाने के लिए जा रही हूँ? मैथ्स। आप लोग तो मुझे पहचानते हैं ना कि मैं मैथ्स सिखाने के लिए आई हूँ। यस, लास्ट डे आई टॉट यू द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पार्ट 1। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पार्ट 2। आप लोगों को पहला पार्ट पसंद आया तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए और सब फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल so I can teach you a little bit. I don't know maths very much, but if I try, if I can send you something, I can teach you something. Okay, let me give you a chance. Okay, so चले स्टार्ट करें मैथ्स। आइए देखते हैं हम लोग क्या सीखते हैं। ओके, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को अच्छी तरह से मैथ्स सिखाने के लिए। जितना भी मैं सीखी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं सीखी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो भी सीखी हूँ, जो भी मैं लर्न करने पाई हूँ, वो आप लोग का इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ गिव मी अ चांस बच्चों। ओके, trigonometrical identities. First sum is tan square theta. You have to prove. No. Tan square theta by sec theta minus 1 whole square equals to 1 plus cos theta by 1 minus cos theta. So, how can you prove? You also try. Okay. So, we will write left hand side. This पेन काम कर नहीं रहा। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड, यू हैव टू राइट लेफ्ट हैंड साइड टू राइट द लेफ्ट हैंड साइड सम एंड you have to prove that left hand side comes to right hand side. That's the answer. Okay, so tan square theta, I'm not writing the question directly, I'm going there. Tan square theta, you know the formula, tan square theta equals to sec square theta minus 1. So I'll write here sec square theta minus 1. Okay, by sec square theta minus 1 whole square, that's the denominator. So sec square theta minus 1, you can take it 1 square also, but you will not write it. Okay, so sec square theta minus 1, you know a square minus b square equals to a plus b. What? A plus b multiplied by a minus b. ये आप लोग कब सीख चुके हैं? क्लास 7 में जब एल्जेब्रा पहली बार सीख रहे थे तब लिखते थे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b multiplied by a minus b. So I'll put it here. Okay, so square theta minus 1, that is 1 square. So a square minus b square. I'll not write the square. So sec square theta minus 1, that is sec theta plus 1 multiplied by sec theta minus 1. Okay, denominator क्या होगा? Sec square theta minus 1 whole square. That is, you can write it twice. No. So sec theta minus 1 into sec theta minus 1. So here is sec theta minus 1, here is also sec theta minus 1. So cut it. Okay. So what is there in the numerator? That is sec theta plus 1, and in the denominator sec theta minus 1. So I have to take it as a cos theta. So reciprocal is sec theta is cos theta, 1 by cos theta, you know. Okay. So sec theta I can write 1 by cos theta plus 1, and in the denominator I can write here 1 by cos theta minus 1. You are understanding or not? Okay, I'm trying my level best. So I can write here cos theta in the numerator, that is also the sum. Okay, so cos theta is the LCM. So 1 plus cos theta you have to write 1 plus cos theta. Now here is also cos theta is the denominator, and so I'll write 1 minus cos theta.
cos theta denominator cut. So I can write 1 plus cos theta by 1 minus cos theta. Okay, that is the right hand side. 1 plus cos theta by 1 minus cos theta. So you have to write. I'm not writing here. So you have to write right hand side, that is 1 plus cos theta by 1 minus cos theta. That is left hand side equals to right hand side. So proved. Okay. So we are moving to the next sum. That is question number 2. That is sin theta plus cos theta multiplied by sec theta plus cosec theta. You have to prove that 2 plus sec theta cosec theta. So first one you have understood? Okay, you understood. Okay. So प्लीज मेरा वीडियो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके मेरा सब्सक्रिप्शन कीजिए, जैसे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से सिखा सकूं. ओके, एंड शेयर माय वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड यू विल राइट. ओके, सो sin theta plus cos theta into sec theta plus cosec theta. What I can write? So sin theta plus cos theta multiplied by 1 by cos theta plus 1 by sin theta. I can write? Yes, 1 by sin theta. You can write? There is a reciprocal of sec theta and reciprocal of cosec theta. Okay, so now what I can do? The sin theta plus cos theta multiplied by, that is denominator is cos theta into sin theta, cos theta into sin theta. Okay, and numerator is sin theta plus cos theta. Okay, so here is sin theta plus cos theta, there is also sin theta plus cos theta, then we have to multiply. Okay, so sin theta plus cos theta into sin theta plus cos theta, that is sin square sin theta plus cos theta whole square, you can write, and the denominator cos theta multiplied by sin theta. आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे मुझे आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं सिखा सकती हूँ. ठीक है, थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से मैथ सिखा सकूं. ओके, सो sin theta plus cos theta, that is a plus b whole square. Sin theta plus cos theta square मतलब a plus b whole square. So a plus b whole square, you know, a square plus 2ab plus b square. I am writing here a square plus b square plus 2ab. Okay, so a square plus b square plus 2ab. 2 sin theta cos theta. Okay, I can write it, and denominator cos theta into sin theta. Okay, understood? So what do you know? That's the formula. Sin square theta plus cos square theta. What is the value? Sin square theta plus cos square theta is 1 plus 2 sin theta cos theta sin theta cos theta. Okay, by cos theta sin theta. Okay, so what I can write? Just split it. Okay, 1 plus cos theta sin theta plus 2 sin theta by sin theta cos theta. You can write it. Okay, so 1 by, just split it. This is the binomial, बीच में प्लस लिखिए, यहाँ में क्या होगा 1 by cos theta sin theta plus 2 sin theta cos theta by cos theta sin theta. 2 sin theta cos theta by sin theta cos theta. Okay, so cut it, sin theta cos theta sin theta cos theta. Yes, so that is here 2. Okay, so 1 by cos theta, that is, and 1 by sin theta. So 1 by cos theta means sec theta. Okay, and 1 by sin theta means cosec theta. Okay, cosec theta plus
2. So you are writing here. My handwriting not at all good. Okay, please थोड़ा कष्ट करके समझ लीजिए. तो 1 by cos theta that is sec theta, and 1 by sin theta, what is the common? 1 by sin theta equals to cosec theta plus 2 here. Okay, we have cut it. So that is the right hand side. 2 plus sec theta cosec theta. You will write 2 here and sec theta cosec theta. Okay, that is proved. Left hand side equals to right hand side. So note it down. Okay. नेक्स्ट काम में हम लोग मूव करते हैं. तो चले थोड़ा सोच लो. ओके बाय.